All right, this lecture is being recorded, and in this lecture, we have to talk about the checking criteria which IELTS examiners use to mark your IELTS writing essay, right? Specifically, we will be talking about the IELTS Essay Task 2. There are four things you can see. The first column is task achievement, second is coherence and cohesion, lexical resource, and grammatical range. Now, these are different details. For example, this full row shows the information about the band 9. Now, band 8 means if someone is getting the band 8, it means he must or she must have to fulfill these um, four important things. Okay, all of these contribute to your overall assessment of your writing. For example, 25% this one, 25% this, and overall these are the very important things. Now, the first thing in terms of understanding, okay, you may read all those details, compare band 8 or band 7 criteria, band 8 criteria, sorry, band 8 or band 6. Now it is up to you whenever you have time, read all of them, compare all the things, but I'm going to tell you so that you may understand all the details in simple words, right? What is the meaning of this task achievement? The first thing, what is the meaning of this task achievement? Task achievement, in simple word, it means that whatever they have asked in the question, you have to answer every single detail, right? If they have asked you to write advantages, then advantages should be discussed. Advantage, not the single one. Advantages means more than one. Done. If they have talked about discuss both sides and give your opinion, right? It means you have to discuss both sides and you also have to mention your opinion as well. If you don't include your opinion, then it means you haven't answered the question fully. This is the first thing in task achievement. The second thing is obviously they have asked you to write more than 250 words, right? You should not write more than 300. Stay between 250 and 300 because the more you will write, the more there will be chances of mistakes, right? But it does not mean if you write 310 or 320 words, you cannot get band 7, right? I know students, even I once attempted the test and I wrote up to 320 words and got 7 band, right? But I'm not recommending it. Why? Because the more you write, the more there will be mistakes, right? So stay between, and I also know the people, the students, my own students who have achieved band 7 by writing only words between 260 and 270. So it depends on the quality, not the quantity. If you follow these band criteria and you write the essay, inshallah, you will get your desired result. Why am I saying about the band 7? Band 7, you can say, uh, is the maximum band people or the students need in Pakistan, right? For study visa, you only need 6 or maximum 6.5. For immigration, you need at least 7, right? So this is something band 6 or band 7, but mostly people don't need above 7. So 7 is the thing which mostly people struggle and attempt too many times to get this. So this is the thing. Task achievement. These are the two things. Fully address the question. Second, words requirement should be fulfilled. Next, the second criteria is coherence and cohesion. These words are, and they sound difficult to understand, but uh, write each term on Google and search the meaning. In simple word, these uh, these words mean that your essay should be well structured, everything should be discussed in a sequence, and there should be unity. Unity means there should be a linkage between the sentences as well as between the paragraphs, right? It does not mean कि एक paragraph कि और चीज describe कर रहा है और दूसरे में बिल्कुल ही आप किसी और दुनिया में चले गए हैं. No, even if you are discussing disadvantages in the second paragraph, it means कि आप you should use linking words. They have used the term called cohesive devices. You can look here. Cohesive devices means linking words. However, therefore, moreover, if you have to describe the same thing again, आप क्या यूज करते हैं? पहले एक चीज डिस्कस कर ली हो तो दोबारा आप जब सेम टाइप ऑफ चीज डिस्कस करेंगे तो आप क्या कहेंगे? There, आप क्या कहेंगे? Furthermore, similarly, in addition to the thing discussed before, I hope so ये समझ आ गई. Cohesive devices are basically linking words or the linking expressions. तो मैं क्या बता रहा था कि पैराग्राफ्स आपस में मिलते जुलते हैं. पहले में आपने एडवांटेजेस डिस्कस किए, दूसरे में जब डिसएडवांटेजेस भी आप डिस्कस कर रहे हो ना, तो यू शुड राइट ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल डिसएडवांटेजेस. अब ऑन द अदर हैंड शोज
कि भाई पहले जो मैंने बात की अब उसके मैं ऑपोजिट बात कर रहा हूँ, ठीक है, यानी यू आर शोइंग अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू पैराग्राफ्स एंड व्हाटएवर दे हैव आस्क्ड। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप अगर दो रीजंस किसी चीज के बारे में देंगे फर्स्ट पैराग्राफ में एक और दूसरे में दूसरी, तो जब दूसरी रीजन दें तो आप बताएं another major या another key या another vital, another crucial, आई होप सो ये समझ आ गया, another crucial reason to, ये ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। ओवरऑल इट मींस there should be unity, your paragraphing, your essay should be well organized. Third thing, lexical resource. In simple words, it means vocabulary, right? Vocabulary simple means that the words that you use to explain the things, right? A words ka, it does not mean you should check on Google. You should check on Google. Oh, what are the high vocabulary words to get band 9 or band 8? Let me tell you, we should be very practical. ये जो vocabulary के words है ना, ये आपको real test में याद वगैरह नहीं रहते. We should be very practical. उस time exam pressure इतना होता है, question को understand करके आप उसको proper लिख लें और recheck कर लें, यही बहुत बड़ी बात होती है. लेकिन देखिए band 7 की vocabulary के लिए चाहिए क्या? वो ये नहीं कहते कि बहुत क्या कहते हैं हाई फाई वर्ड्स यूज करें, वो कहते हैं जी लेस कॉमन लेक्सिकल आइटम्स। इसका मतलब क्या है? फिर बैंड 8 में है तो क्या लिखा है, ये यूजेस अनकॉमन लेक्सिकल आइटम्स। लेक्सिकल आइटम मीन वोकैबुलरी वर्ड्स। अनकॉमन मींस के वो वर्ड जो हर बंदा ना इस्तेमाल कर रहा हो, डिफरेंट वर्ड्स। और इसका एक और मतलब ये है कि टॉपिक रेलेवेंट आपकी होनी चाहिए वोकैबुलरी की वर्ड्स, राइट? इफ यू आर, I mentioned this in the morning class too. If you have to write an essay about the online education, now the main topic is about education, right? So you should use the words like institute, academic institutions, universities, academics, right? Academics and obviously colleges means the words which are directly linked with the main topic. इसको क्या कहते हैं? टॉपिक रेलेवेंट वोकैबुलरी, और यही मेन चीज है, ठीक है। याद रखें वर्ड्स के स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए, ये ना वो मुश्किल वर्ड आप कोई लिख लें और अगर स्पेलिंग्स उसके ना ठीक हो, या आप बड़ी मुश्किल से याद करके कोई वर्ड लिखे हो और उसके स्पेलिंग्स ही ठीक ना हो, तो वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। स्पेलिंग्स मस्ट बी करेक्ट। अगर आपको डाउट है कि वर्ड के स्पेलिंग्स नहीं ठीक, देन व्हाट शुड यू डू? भाई चेंज द फुल सेंटेंस if it is needed. Clear? So you have to be very careful while using the vocabulary words. ठीक है। अब आप कहेंगे जी ये words relevant आते कहाँ से हैं, इतना तो टाइम ही नहीं होता। You have 40 minutes for the task 2, right? You have to spend first 5 according to time management rules that I shared with the students. First 5 minutes must be spent on what? On understanding the question, right? कि क्वेश्चन उन्होंने पूछी क्या क्या चीज है आपके क्वेश्चन पेपर पे। इफ यू हैव टू राइट क्वेश्चन, इफ यू हैव टू अटेम्प्ट पेपर बेस्ड टेस्ट होगा तो आपके क्वेश्चन पेपर पे यार इतनी जगह होगी, वहां पे लिखें कि किस पे क्या क्या चीज़ है। अगर एडवांटेजेस है तो बताइए यार, सोच करके कौन कौन से एडवांटेज मैं डिस्कस करूंगा। पहला एडवांटेज प्रैक्टिकल लर्निंग, दूसरा एडवांटेज रैपिड प्रमोशन इन द जॉब सेक्टर, ठीक है, हाई चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब, मतलब जो भी है मैं एक बात बता रहा हूँ जस्ट। तो क्या आप करेंगे? यू विल राइट द पॉइंट्स। फिर उसके बाद अब मेन क्या टॉपिक है? एजुकेशन। आप देखिए इसके बारे में, इसकी जगह कौन कौन से सिनोनिम यूज हो सकता है, जो जो आपके माइंड में आए वो लिखें, लेकिन बट स्पेंड ओनली 5 मिनट्स, नॉट मोर देन दिस। और 5 मिनट्स काफी टाइम होता है। जब समझ आ जाए फिर लिखना शुरू करें। अब आप जब लिख रहे होंगे तो आपको टाइम स्पेंड नहीं करना पड़ेगा या सोचने में कि यार ये क्या करना था, कौन सा आप लिखो, ये सारा काम आपका पहले से हुआ होगा। सो स्पेंड 5 minutes in understanding the questions and planning the question, then 25 minutes on writing, not more than 25 minutes। 25 minutes अगर पूरे हो जाते हैं, अगर आपका ऐसे में कोई चीज रह भी गई है, फोर्सफुली अपना आंसर क्लोज करें, मेक श्योर के वर्ड्स टू 50 प्लस हो, ठीक है, एंड देन रीचेक। लास्ट 10 मिनट्स मस्ट बी स्पेंट ऑन रीचेकिंग, अदरवाइज इफ यू एक्सपेक्ट कि आपका बैंड 6 आएगा तो कंफर्म है कि आपका बैंड 5 आएगा इफ यू डू नॉट रीचेक योर वर्क। आई होप सो ये बात क्लियर होगी आपको। टाइम मैनेजमेंट रूल भी साथ मैंने बता दिया लेक्सिकल रिसोर्स के, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे मैं मिस कर गया हूँ, वोकैबुलरी तो आपने करनी है, टाइम मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है। इफ यू हैव टू गो टू वॉशरूम, लिसनिंग टाइम तो आप नहीं जा सकते, रीडिंग और राइटिंग में आप टेस्ट के मिड में जा सकते हैं, फर्स्ट 10 मिनट्स में भी नहीं जा सकते होते और एंड 10 मिनट्स में भी। तो यू विल आस्क द एग्जाम इन्विजिलेटर एंड ही विल गिव यू गाइडेंस अबाउट इट, ठीक है। लेकिन याद रखें उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम कोई भी नहीं मिलना। लास्ट थिंग एंड वी विल मूव फॉरवर्ड, वर्ड्स काउंट।
वर्ड्स काउंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। टास्क अचीवमेंट जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया है उसकी, कंप्यूटर बेस्ड अगर आप टेस्ट देते हो ना तो उसमें तो वर्ड काउंट लिखा आ रहा होता है, यानी कितने वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप पेपर पे जब लिखते हो वर्ड काउंट तो नहीं आ रहा, यू हैव टू काउंट योरसेल्फ। अब आप क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे और एंड पे काउंट करेंगे, एंड पे काउंट करें तो लेट्स से वर्ड सिर्फ 180 हो, फिर क्या करेंगे, you cannot prolong your conclusion, right? Conclusion means the summary, उसको आप लेंथी नहीं कर सकते। आपका पेपर पेंसिल से ही होता है, आप इरेज करके लिख सकते हैं, लेकिन इतना टाइम नहीं होता ना। तो आप क्या करें, आफ्टर राइटिंग ईच पैराग्राफ काउंट द वर्ड्स, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, काउंट द वर्ड्स। लेट्स से यू रोट 50 वर्ड्स इन द फर्स्ट पैराग्राफ, 50 लिख लिए, आपने बॉडी पैराग्राफ 1 स्टार्ट किया, लेट्स से यू रोट 100 words, तो 100 plus 50 150, this 150 is showing you how many words are left, right? अब फिर आप थर्ड बॉडी पैराग्राफ लिखें, लेट्स से 100 वर्ड्स और लिख दिए, तो वर्ड 150 प्लस 100 कितने हो गए, 250। अब आपको पता है यू आर इन द सेफ रेंज, सिर्फ दो सेंटेंसेस लिखें कंक्लूजन में, योर रेंज would be around 270 or 280, that's it, you are done। very important thing, ठीक है? And the last thing, and the most important thing if you want to get band 7, grammatical range and accuracy, ग्रामर की रेंज हो और वो एक्यूरेट भी हो। ग्रामर की अब रेंज का मतलब क्या है, ये सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, ठीक है? बैंड 7 के लिए क्या रिक्वायर्ड है जी, बैंड 7 दे से use a variety of complex structures। There are 3 types of sentences, one simple sentences, 2 compound sentences, and 3rd complex sentences। If your aim is to get a band between 6 and 7, then you don't need to focus too much on them। क्यों? क्योंकि जो सैंपल आंसर्स मैं आपसे शेयर करूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स इंप्रूव हो जाएंगे, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। बट इफ यू आर एमिंग टू गेट अ बैंड 7 और अबव, then you must prepare them well। उनकी प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है। आई हैव रिकॉर्डेड अ लेक्चर ऑन दीज सेंटेंस टाइप्स, आई विल शेयर इन द ग्रुप। ये आपकी पर्सनल एफर्ट है, जो जिसका टारगेट है उसके मुताबिक तैयारी करे। एंड आफ्टर वाचिंग द लेक्चर इफ यू हैव क्वेश्चंस यू कैन सिंपली डिस्कस विद मी पर्सनली, ठीक है? और उसके बाद कहते हैं प्रोड्यूस फ्रीक्वेंट एरर फ्री सेंटेंसेस। वही बात कि एक्यूरेसी हो, ज्यादा सेंटेंसेस आपके क्या हो, एरर फ्री। हैज गुड कंट्रोल ऑफ ग्रामर एंड पंक्चुएशन बट may make few errors। Punctuation means full stop, comma, capital letters, small letters। हम जल्दी जल्दी में न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं लिखते। आप कहेंगे ये बच्चों वाली मिस्टेक्स है, बट दीज आर द मिस्टेक दैट वी फ्रीक्वेंटली मेक, राइट? फुल स्टॉप लाजमी लगाना, उसके बाद कैपिटल लेटर से शुरू करना है, कॉमा, मेन गेम कॉमा की है। कॉमा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द होल डिस्कशन, ठीक है? तो कॉमा का ख्याल रखना है। एंड दैट्स इट, दिस इज द एंड ऑफ आवर डिस्कशन। ग्रामेटिकल रेंज में आपको मैंने कहा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यहाँ पे एक और चीज भी माइंड में रखें, टाइप्स ऑफ टेंसेस भी, present, past, future, all three will be used। Majority text would be in present tense, but when you will give an example and will include any reference from the past, obviously you will use second form of verb, ठीक है? और अगर आप कोई फ्यूचर की बात करेंगे तो ऑब्वियसली विल, शैल यूज होगा। तो इन चीज़ों का आपने खुसूसी ख्याल रखना है। सो इन शॉर्ट what we have discussed so far in this ब्रीफ लेक्चर के, आपका राइटिंग का जो मॉड्यूल है उसमें जो राइटिंग टास्क आप अटेम्प्ट करते हैं वो किस बेस पे चेक होते हैं। द फर्स्ट वन इज टास्क अचीवमेंट। इन शॉर्ट टास्क अचीवमेंट मींस के वर्ड्स की रेंज पूरी करें, वर्ड्स की रिक्वायरमेंट पूरी करें और जो जो पूछा गया है हर चीज को लिखें, बताएं। कोहेरेंस एंड क्लियरनेस means your essay should be well organized, should be in a sequence, and you should use different linking words to show the relationship between the sentences as well as between paragraphs। Lexical resource, lexical resource means use vocabulary, the words that are relevant to the topic, ठीक है? स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नहीं है कि जितने ज़्यादा वर्ड्स मुश्किल होंगे उतना बैंड ज़्यादा आएगा। नो, दिस इज नॉट द केस। And last thing, grammatical range and accuracy, it means that use different tenses। Yes, what I'm using them, use different tenses के साथ साथ sentence types भी different use करें, ठीक है? अभी सब माइक म्यूट रखिए जी, जिस टाइम मैं कहूँगा तब आपने क्वेश्चन पूछ लें, प्लीज वेट। अच्छा, ताकि फिर मैं उनको ना फुली एड्रेस कर सकूँ। Use different tenses plus use different sentence types and make sure that they are accurate। And how you would make sure? Rechecking is the most important thing, right? Now
इन सब को समराइज करके शॉर्टेस्ट वे में मैं अगर बताऊं तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स? टॉप पे स्पेलिंग मिस्टेक्स, सेकंड पंक्चुएशन मिस्टेक्स, थर्ड टेंसेस की या सेंटेंसेस की मिस्टेक्स, एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग रिपीटिशन। हम क्या करते हैं, बार बार वर्ड्स पूरे ना हो रहे हो तो एक ही लफ्ज को बार बार यूज करेंगे सेम टाइप ऑफ सिचुएशन में। इंक्रीज है तो बार बार इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, नो, इंक्रीज की जगह आपको यूज करना चाहिए गोइंग अप, rising, surging, skyrocketing. These are the words that you can use instead of just increase. There are other words which you can use for other words. Like reduce. Reduce means decrease. Decrease means going down. ठीक है? Falling, plummeting, plunging. These are different words. These are the different words that you can use. ठीक है? कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको बताया इस पूरी डिस्कशन को 4 पॉइंट्स में मैं समराइज करूं तो वो क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक्स को ठीक करें, यानी जो रीचेकिंग आप करेंगे ना, रीचेकिंग शुड बी बेस्ड ऑन दीस 4 पॉइंट्स. 1, spelling mistakes correction. 2, punctuation, full stop, comma, capital letters, small letters. 3, the most important, tenses और types of sentences को देखना कि यार complex sentence लिखा है तो वो ठीक है कि नहीं. Fourth important thing, grammar की सॉरी repetition. ठीक है, repetition के बार बार वर्ड्स को रिपीट नहीं करना, और ये ना हो वर्ड्स पूरे नहीं हो रहे तो बार बार पिछले सेंटेंस को ही कॉपी करके लिखने, या इंट्रोडक्शन में गिवन क्वेश्चन को ही कॉपी करके लिखने. नो, यू हैव टू पैराफ्रेज. Right? These are the very important instructions. If you focus on these things, inshallah, you will be able to get a good band score. And make sure that it just not depends on your qualification and ability to get a good band score. Always be humble, okay? Or never just think bad about anyone. ठीक है, अल्लाह ताला से ज़रूर आप मदद मांगे. ठीक, आपका बैंड स्कोर जस्ट आपकी काबिलियत की बेस पे नहीं आता. ठीक है, जब अल्लाह ताला की मदद सामने हाल होती है तभी कामयाबी होती है. राइट? सो these were the important instructions. Now I'm going to okay, so far whatever we have discussed, जिसका जो क्वेश्चन है पूछे ताकि फिर हम आगे चलें. क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा. ठीक है, ताकि ये लेक्चर मैं बाद में आप सब स्टूडेंट्स के लिए अपने ग्रुप में, हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है जिसमें आप सब स्टूडेंट्स ऐड हैं, वहाँ पे मैं पोस्ट कर दूंगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा. जी, क्वेश्चंस के लिए आई वुड आस्क, you can ask questions now. जी मोहम्मद वसीम, कोई क्वेश्चन है तो पूछिए. सर मेरा क्वेश्चन है. जी सोहेल पूछिए. Sir, if the task 2 topic is simple, for example, it asks about advantages and disadvantages of certain thing, तो क्या इस सूरत हाल में हम अपना ओपिनियन दे सकते हैं? Opinion ना पूछियो, and still if you mention, it does not make any difference. But your focus should not be on opinion. Your focus should be on discussing advantages and disadvantages. But if you include your opinion in just one sentence, it's okay, no problem. Okay, sir. Thank you. Next for your question. Ji, I think I have tried my best to keep all the concepts as simple as possible. Excuse me sir, आवाज आ रही है? जी आ रही है. सर मैंने ये पूछना था कि आपने पंक्चुएशन की बात की कि ये समझ नहीं आ रही कि मतलब स्पेसिफिक जगह पे या स्पेसिफिक सेंटेंस पे कहाँ पे कामा लगाना है, या कामे का यूज काइंडली अगर आप कोई इस तरह का तरीका समझा दें काइंडली सर. Comma is a thing that you have to understand. Complex sentence बनता ही तब है जब comma की आप proper position करें. ठीक है? I will share a brief lecture in the form of in a written lecture that would be a PDF containing the guidelines about how to use comma. तो वो मैं पोस्ट कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. बट मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, सैंपल आंसर जब आप पढ़ेंगे ना, जो मैंने ग्रुप में आज 5 और भी पोस्ट किए हैं, वो किस लिए किए हैं? So that you should read the sample essay topics and answers, ताकि आपको पता चले अच्छा स्टूडेंट ने कैसे कॉमा कहाँ लगाया है. ठीक है, I have checked those essays and marked a band score at the end as well, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए अच्छा इस तरह का लिखें इस क्वालिटी का तो हम इतना बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं. तो कॉमा की लर्निंग इंशाल्लाह आपकी वहाँ से हो जाएगी. ठीक है Sir, the second question is the maximum. थोड़ा ऊंचा बोलें. सर सेकंड क्वेश्चन यही था कि ये जो 250 वर्ड्स का बता रहे हैं वहाँ पे, तो ये एग्जैक्ट 250 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं या ये कोई कमी पीछे? मोर देन 250 होने चाहिए, अराउंड 270 और 280. अच्छा सर.
अगर कम हो या कोई मतलब बंदे को इस तरह पता नहीं चलता या गिनने होते हैं सर ना कम नहीं वर्ड्स। होना। यही तो लेक्चर में अभी मैंने आपको इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि काउंट द वर्ड्स आफ्टर एवरी पैराग्राफ, अगर आप पेपर अच्छा बेस्ड टेस्ट देंगे तो, ठीक है, ताकि जी आपका सर, वर्ड काउंट आप फोकस्ड रहें उस पर। ठीक है ठीक सर, है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम जी। अच्छा जी, आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू कीप एवरीथिंग एज सिंपल एज आई कुड। अब आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। जिस किसी को IELTS राइटिंग में अच्छा बैंड लेना हो, मस्ट वॉच दिस लेक्चर। मैं रिकॉर्ड वीडियो ग्रुप में पोस्ट करूंगा। दीज आर द कॉन्सेप्ट्स। एक दो दफ़ा लेक्चर दोबारा देखिएगा ताकि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस सर की। जी, सर जी जी जी, पूछिए। सर जी सर, होमवर्क इसका कब मिलेगा? जी मैं बताता हूँ, एक रेलेवेंट टू द टॉपिक क्वेश्चंस, सॉरी, रेलेवेंट टू व्हाटएवर वी हैव डिस्कस्ड, ये क्वेश्चन को याद होना चाहिए। अब आगे होमवर्क क्या है आपका, वो बताता हूँ आपको। ठीक है जी, आई एम गोइंग टू पॉज द रिकॉर्डिंग नाउ।